Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly everyone. risky. Hi, There hi, may be hi. no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co. And we are live. Hey Parth, hey Shubham, how are you both? Hi, Madhav. All Hey, good, all Madhav. good. Awesome, We are awesome. all connecting from different parts of the world today. Yes. Correct. Just to let our audience know, where are you both? Actually, I am at CoinSwitch headquarters right now in Bangalore. Where are you both connected from? Yeah, so I am actually at CoinSwitch Unfold. Uh, CoinSwitch Unfold, sorry, CoinDCX Unfold, my bad. I am at the CoinDCX Unfold, where a lot of people from crypto industry have joined us, and it's been a great atmosphere here actually. मैं पार्थ की तरह I have not been to the premier crypto event that happened Open 2049 recently, but here also the atmosphere is not very bad. I'll show you soon if I can. Yeah, Awesome. What about you, Parth? I am actually in Dubai. I had come out for like a personal trip, but like last week also, crypto never sleeps, so छुट्टी में भी थोड़ा बहुत time निकाल ही लेते हैं. And basically, Dubai again, like is the hub. Next year, the token is also going to happen in Dubai, and like there are a couple of events going on right now also, GTEx and World Blockchain Summit. So I will probably meet a couple of people here as well. Great. So, both of you are having a decent time. Everyone can see. Awesome. Starting off with all things BTC. So, what had transpired the past week around Bitcoin? And I'm sure a lot of viewers are aware of what went down with Cointelegraph and so on. Just to explain everything in detail. And yeah, starting off with Parth. So बहुत ही like unique हमें देखने को मिला ये है कि basically it was a dress rehearsal for what happens when actual Bitcoin spot ETF gets an approval. And हुआ कॉइन टेलीग्राफ पे एक sort of like fake news आई कि मिल गया उन्हें अप्रूवल BlackRock को for their iShares Bitcoin spot ETF. And बहुत ही crypto terms में there's a term for it. It's called God candle. तो हम लोग को गॉड ग्रीन कैंडल देखने को मिला है like literally in 1 hour BTC prices went up by $3,000. So it moved Okay. from less than 27K to almost 30K in 1 hour. And within like as soon as people got to know कि ये गलत news है like सही नहीं है, the same price like retraced back to those 27K levels. Having said that, उसके बाद से price has been on an uptrend. मतलब आपने देखा होगा पिछले हफ्ते there was a lot of weakness in prices. बहुत ही global macro uncertainty बढ़ गई थी. But this one news itself like basically showed कि क्या potential है like अगर spot Bitcoin ETF आ जाता है. And to put things in perspective, I think spot purchases orders were in the billions of dollars. Like जैसे लोगों को पता चला कि ये होने वाला है, everybody started purchasing spot Bitcoin, and that led to like I think liquidations हो गए बहुत सारे on both sides. पहले shorts liquidate हुए क्योंकि price ऊपर गया, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने long positions ले लिए, और जब price retrace हुआ तो वो long positions liquidate हो गए. Overall बहुत लंबे टर्म से मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं थी, वॉल्यूम नहीं थी, सब चीज अचानक से वापस आ गई. लाइक लिटरली 1 घंटे के अंदर एवरीथिंग 3x लाइक वॉल्यूम I वॉलिटिलिटी. mean, सो there were, to put things into numbers, 100 million plus liquidation हुआ था, $100 million plus in a span of like 30 इन एन 40 आर, minutes. How to या say? 30-40 In an hour, yeah. Yeah. Wow. So, just to like Bitcoin is a big asset class now. Like अगर कोई भी चीज like $600 billion के आसपास उसका वो है वॉल्यूम है, और that moves by 10% 5% in an hour. मतलब आप समझ रहे 50 बिलियन कुछ नया like इनफ्लो आ गया अचानक से. So big move. And again post that also there have been positive reports coming out from SEC. And in fact, Bloomberg पे there is a gauge which keeps on saying कि कितना percentage chance है approval का. That is now close to 90%. So it's sort of confirmed कि the ETF will get approved. End date जो है वो January 24th की है for the first filing. And जो कि आर्क इन्वेस्ट ने फाइल किया था. SEC चेयर गैरी गेंसलर का इंटरव्यू भी हुआ इसके बाद एक कि लाइक क्या आपको क्या लगता है इसका. तो ही सेड कि we are trying to review all the filings together. We don't want to give like a first mover advantage कि somebody comes out of the bat and takes away all the volume that will come in. If there will be an approval, it will be approved for all of them. And again massive inflow आ सकता है. ये BlackRock itself
20 बिलियन का नंबर कोट कर रहे हैं, 20 बिलियन worth of what they've been seeing, demand for this for Bitcoin ETF. So all positives there, and market has continued the uptrend after this, even though there is so much uncertainty. ये war जो which is happening in the Middle East, उससे we can't really predict कि what is going to happen in the future, but Correct. we are seeing like a lot of positives for BTC as an asset class compared to other risk on assets. आप देखेंगे equities गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट हो चाहे यूएस मार्केट हो, काफी करेक्शन आया equities में, बट बिटकॉइन और लाइक ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स में इतना मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिला. Shubham, if Absolutely. you want to add something on that. Yeah, definitely. I think as we are talking, prices वापस सोर कर रहे हैं और वो जो 30,000 का लेवल हमने उस दिन टच किया था, इट्स अगेन इन साइट. मतलब अभी बिटकॉइन 29.7 के ट्रेड कर रहे हैं एज वी स्पीक इन यूएस डॉलर. और पीपल नो नाउ कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल क्या कर सकता है मार्केट को लेके. एंड आई थिंक ट्रेडर्स आर So trying to get into. Yeah. Am I audible? Yes, Shubham, you are now. yeah, Yeah. So I think that's it. Like I think people now know what will happen when the ETF actually approves and so accumulating coins. ETF को अगर मैं थोड़ा सा और वो करूँ तो होगा क्या, बेसिकली अब हर इंस्टीट्यूशन को दे कैन टेक बिटकॉइन एक्सपोजर वाया द ETF. So even if they want to put Hmm. 1% of their total portfolio in Bitcoin, that becomes a possibility. एंड ये सब जो ब्लैक रॉक जो ट्रिलियन डॉलर एसेट मैनेजर जो करेंगे, वो लोग फिर इसको मार्केट करेंगे टू देयर इंस्टीट्यूशंस कि अरे यू शुड हैव लाइक सम एक्सपोजर टू बिटकॉइन एज वेल. तो उससे बहुत ज़्यादा लाइक डिमांड आने की, वी कैन एक्सपेक्ट कि अ लॉट ऑफ लाइक इंस्टीट्यूशनल डिमांड विल कम इनटू द स्पेस. ब्लैक रॉक ऑलरेडी पार्टनर्स विद कॉइनबेस प्राइम to like distribute these products amongst its users. Yep, yep. With all of this news, we've also seen that BTC dominance is also rising, like Parth and Shubham just said. So I think which is at an high of almost 2.5 years right now. Correct. So Yes. the So demand of इस Ethereum पे and altcoins, yeah, इथीरियम एक और वो बहुत ही रिलेटिव मेट्रिक जो लोग मेजर करते हैं, ईथ बीटीसी. ईथ बीटीसी correct. पेयर कैसे ट्रेड कर रहा है, वो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि ये जो सारे पॉजिटिव्स हो रहे हैं, ये इट इज ओनली हैपनिंग फॉर बीटीसी, इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स. एंड आई मस्ट हाईलाइट कि फिडेलिटी की एक रिपोर्ट आई अभी लाइक लास्ट वीक में, जिसमें उन्होंने बोला है कि लुक एट बिटकॉइन एज अ सेपरेट एसेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्रिप्टो. like they have highlighted this point, and that is why we are seeing कि BTC dominance जो है वो 50% के अराउंड टच कर रही है. This also marks होता क्या है, जब मार्केट बुल रन आता है तब पीपल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम BTC इनटू अदर कॉइन्स, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, और अदर कॉइन्स जो है वो हमेशा ज़्यादा लाइक प्राइस अगर ऊपर जा रहा होता है तो ज़्यादा ऊपर जाते हैं कंपेयर टू BTC. एंड जब सेफ्टी के लिए लोग जाना चाहते हैं, लाइक पीपल वांट टू गेट इनटू सेफर एसेट्स विद इन क्रिप्टो, दे रोटेट बैक इनटू BTC, तो अपने ऑल्ट कॉइन बेच के बिटकॉइन खरीद लेते हैं. Correct. And I think that should be the best strategy right now also according to me. Again, no financial advice. कि आप BTC accumulate करते रहें, and only when you are getting profitable in BTC, only then you should consider adding more altcoins into the system. ये जो phase है, हर बार halving से just पहले का जो phase होता है, उसमें Bitcoin का dominance बढ़ता जाता है, and that's what we are seeing even now. Correct, correct, correct. With BTC rising, and we have also noticed a lot of altcoins के तरफ भी attention जा रहा है. Like we saw STX and XCC were also rising last week. Would you like to throw some light on that? So STX को like literally is a Bitcoin related crypto. It is a layer 2 stacks जो है वो on top of Bitcoin network. तो उसका use case like becomes more prominent if Bitcoin becomes more mainstream. तो उसका तो directly उसकी वजह से price बढ़ा है. एक और जो I think आपने mention नहीं किया वो है Bitcoin Satoshi Vision BSV. BSV is BSV, up yep, yep. almost, yeah, it's up almost 30% in the last week. Uh, BSV is a hard I fork of think the Bitcoin network. 56% part. It's 56% up 56%. in the last 7 days. Yeah. Correct. So उसमें वो बेसिकली एक बिटकॉइन का फोक है, हार्ड फोक जो 2018 में हुआ था. एंड इट बेसिकली इट हैज ब्रेकिंग अ टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल. उसके अलावा उसके पर्प्स लॉन्च हो गए हैं ऑन बाइनेंस, तो बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लेना शुरू कर दिया है. लॉट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम साउथ कोरियन एक्सचेंजेस.
तो साउथ कोरिया में इट इज अ वेरी पॉपुलर टोकन एंड अगर आप ग्लोबली देखें तो साउथ कोरिया डोमिनेट्स ऑलमोस्ट 10% ऑफ स्पॉट परचेजेस जो है वो साउथ कोरिया से होते हैं। तो उसमें भी बीएसवी आई थिंक अपबिट उनका बड़ा एक्सचेंज है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है ऑफ बीएसवी, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। एक्सीसी का अगर शुभम इफ यू हैव लाइक एनी आइडिया, एक्सीसी क्यों पंप हो रहा Yeah, है? sure. uh, I think apart from BSV, XCC और BCH भी दो फोक्स हैं बिटकॉइन के, मतलब Yes. इवेंचुअली बिटकॉइन के ही फोक है, बिकॉज बिटकॉइन फोक होके BCH बना, BCH फोक होके BSV एंड XCC बना. So XCC is also a form of Bitcoin and आई थिंक जो नैरेटिव देखने को चल रहा है मार्केट में इस समय, प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो क्रिप्टो है जहाँ पे एक्चुअली लोग जीपीएस के थ्रू माइन कर रहे हैं, वो क्रिप्टो काफी पंप हो रहे हैं. Be it Bitcoin, be it BCH, be it SGX because it's related to Bitcoin. LTC was also pumping Hmm. few days back. अभी वो इतना पम्प नहीं कर रहा है. Even जो AI related इकलौता टोकन है अभी मार्केट में RNDR, वो भी almost 50% up है and major supports and major resistance break कर चुका है. So I feel people are kind of moving back into कि okay, proof of work is something which is an essential part of securing a network. That is my understanding. As of now, people are just moving their money back into Bitcoin and every related technology, any related crypto which takes its essence from Bitcoin. Those assets are also pumping. Correct. The same case when you mentioned about GPOs is happening with Render, if I'm not wrong. Render network. yes, RNDR. Exactly. तो Yes. आर Yes. एन डी आर बेसिकली लाइक यूजेस एज कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका लेट्स से आपका सीपीयू जीपीयू जो है खाली पड़ा है, लाइक उसका कोई यूजेज नहीं हो रहा है, तो यू कैन गिव दैट पावर टू द नेटवर्क एंड इट कैन रन लाइक कंप्यूटेशन ऑन टॉप ऑफ दैट। तो मतलब लेट्स से Hmm. आपको एआई मॉडल कोई रन करना है जिसमें बहुत सारे जीपीयूज की जरूरत होती है, तो आप अकेले नहीं कर सकते, बट आप रेंडर नेटवर्क पे हैं तो आप उसको एज कंप्यूटिंग को यूज करके यू कैन यूज डिफरेंट डिवाइसेस टू रन द सेम एलएलएम मॉडल। Sure. ठीक है. This was BTC and everything related to BTC, but we've also noticed Solana's rollbit का updates and all. Would you like to throw some light on that? तो ये दो है, सोलाना का अलग एक बहुत पंप हो रहा है और हाँ. दूसरा है रोलबिट। रोलबिट एक अलग Yeah. टोकन है, उसका अलग पंप हो रहा है। सोलाना का वी हैव सीन दे ब्रोकन लाइक टेक्निकल लेवल्स, 30% अप है सोलाना भी लाइक ओवर द लास्ट वीक। एंड सोलाना में हुआ क्या है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल पे बहुत पहले डाउट होता था कि ये डाउन हो जाता है, बहुत डाउन टाइम चलता था उसमें। वो जो है चीज़ एकदम अब ऑलमोस्ट कम हो गई है, लाइक आई थिंक लास्ट 3-4 मंथ्स से एक भी डाउन टाइम नहीं आया है सोलाना का। एंड देयर हैव बीन सम प्रोटोकॉल अपडेट्स आल्सो दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एक बड़ा अपडेट जो आने वाला है फायर डांसर, जिसके बाद सोलाना की स्पीड जो है मतलब इट विल बी फास्टर देन ऑल पेमेंट नेटवर्क्स ग्लोबली। वो उसका भी Amazing. रोल आउट इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड एक टेक्निकल जो ब्रेकआउट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोलाना में, क्योंकि सोलाना एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वाज अबव $200 ट्रेड करता था एंड अभी एफटीएक्स के बाद इट हैज फॉलन डाउन टू $8। तो वो 8 से अब 24 3x तो हो चुका है। आगे अब कहाँ जाएगा वी डोंट रियली नो। एंड Right, यशोभा इफ right. यू हैव एनी कमेंट्स ऑन सोलाना, रोलबिट पे Yeah, मेरे yeah. पास I काफी think वो है। पहले सोलाना कंप्लीट करते हैं. सो आई थिंक टेक्निकल लेवल्स भी अगर आप देखें, $25 वाज अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस. दो तीन बार सोलाना ने $25 ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट इट वेंट बैक अगेन अंडर $25. अभी जो $25 क्रॉस हुआ है, इट हैज सम वॉल्यूम्स टू इट. एंड अगर बीटीसी पंप सस्टेन रहा, इफ बीटीसी डजंट गो बिलो 28-28.5 के लेवल्स, और वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा, आई थिंक हम सोलाना फिर से जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है एटलीस्ट वो अराउंड $50 के आसपास है. So if everything goes well, I think we can see Solana also, as Parth said, बहुत ज़्यादा वैल्यू ड्रॉप हो गई है सोलाना की, एंड इट कैन Hmm. गो बैक टू इट्स फेयर वैल्यू, दैट be around $40 something. Again, no financial advice, but this is what the charts are saying right now. या नो फाइनेंशियल एडवाइस। Correct. Correct. Absolutely. Absolutely. Yeah. Anything on rollbit? So rollbit is एक बड़ी थीम है जो इस साल इमर्ज हुई है, इट्स कॉल्ड गेम फाइट और सॉरी Hmm. गैम्बल फाइट, वेयर बेसिकली rollbit is an online casino where you take positions against the house, and if anybody has any information about like casinos कैसे काम करते हैं, the house always wins। तो रोलबिट के केस में भी यही होता है कि अगर जितने ज़्यादा लोग गैम्बल करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, रोलबिट एज द प्लेटफॉर्म keeps on earning more money, and that fees that they generate is distributed to RLB holders, जो रोलबिट टोकन होल्डर्स हैं। तो ये नंबर जो है लाइक सितंबर में वाज अबव 30 मिलियन, लाइक केवल सितंबर में रोलबिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 30 मिलियन इन फीस।
And even in the last like 2-3 weeks, Rollbit पे जो fees generate हो रही है, that is higher than Dexes, that is higher than a lot of Dexes combined जो है उससे ज़्यादा revenue generate हो रहा है Rollbit पे. And reason is very simple, like people like to gamble, people want to like uh, uh, double their Correct. money as soon as possible. That is one of the reasons which Hmm. makes Rollbit a very interesting play. If it is a highly undervalued token because जिस हिसाब से वो revenue generate कर रहा है, अगर मैं same multiples पे उसको compare करूँ, let's say Hmm. to a DEX or a DeFi protocol, it should be valued much higher. I think major इसमें uptick आएगा जब ये list होगा on Binance or any other like major exchange. I think OKX पे है, but Yeah. other like Binance listing के बाद I think is when we can expect like prices to really like go up. Yeah, I think already $500 million FDV पे अभी lie कर रहा है Check कर Rollbit, रहा है, yes. and yeah, and it has good potential given it is, as Parth said, opening up a new dimension of what crypto can do. Correct. Decentralized gaming markets भी एक next step हो सकता है. Opinion trading platform or something like that can also come up on Rollbit. So would be interesting to see how it goes. Absolutely. Absolutely. Anything upcoming for the next week that our users can look out for? I think prominently macro front पे there are so many uncertainties कि you have to stay on Hmm. top of things. मतलब war में क्या होने वाला है ये like nobody knows. If Joe Biden was supposed to come to the Middle East, वो बीच में cancel हो गया because of the hospital bombing. So there are so many like uncertainties that you have to be aware of macroeconomics, क्योंकि that affects all risk on assets. And that is Correct. where I think all users should be very actively saying any like any major political developments or geopolitical developments. Hmm. Crypto markets में such BTC approval remains, the spot Bitcoin ETF approval remains key to watch out for. इसमें क्या development होती है, वो like is something that everybody should watch out for. Shubham, any specific things you Yeah, want I to add think right from now? a trading point of view, अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं खुद से, तो माय एडवाइस वुड बी इस बुल रन का आनंद जरूर लें, जो छोटा सा बुल रन चल रहा है अभी, बट डू नॉट ओवर diversify your portfolio. If things go bad as per the macroeconomic events, you should be able to get out quickly with liquidity. So अगर जो लास्ट टाइम हमने 2020 में एक क्रैश देखा था, 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश देखा था, एनी टाइम सच बिग इवेंट्स हैपन, बहुत मेजर एक क्रैश आ जाता है. I'm always optimistic कि things will not escalate and things will calm down from here. But if it does, you have to be sure that your stop losses are in place and you do not take a lot of risk because of this. So play safe. Correct. Preserving your capital is more important than any gains out there. Very wise advice. Thanks a lot for that, Shubham. Thanks a lot, Parth. Anything else to add up? No, I think we're good. Let's stay on the lookout for any big events happening next week, and hopefully we will tune in again on next Friday. Awesome. Thanks a lot, viewers, for joining in. Thank you, Parth. Thank you, Shubham, for taking out time for this session. We'll see you all next week. Yeah, thanks, Thank Parth. you. Thanks, Madhav. Bye. Bye bye. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co.